नमस्कार। विजन ऑफ एशिया वॉइस कम्युनिटी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में आप देखेंगे कौन थे लचित बोरफुकन, क्या कहते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके बारे में। आज दत्त जयंती है, भगवान दत्तात्रेय के बारे में हमने बातचीत की। गुंटूर विश्व मंदिर से विश्वयोगी विश्वम जी महाराज से। और आज के विजन ऑफ एशिया में आप जानेंगे सोलर पावर के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं के बारे में योगेश बिरला से। तो ये सब करेगा आपकी प्रतीक्षा। इस छोटे से ब्रेक के बाद बने रहें हमारे साथ। फिर एक बार स्वागत है आपका विजन ऑफ एशिया वॉइस कम्युनिटी कार्यक्रम में। और प्रारंभ करते हैं उस संदर्भ से जहां बात की जाती है कि भारत के शूरवीरों के इतिहास को भारत वासियों से छुपाने का जो सिलसिला गुलामी के समय प्रारंभ हुआ था वो पूरी तरह से हटा नहीं। भारत के इतिहास पुरुषों को याद करने के क्रम में लचित बोरफुकन के बारे में पूरे वर्ष विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आसाम के स्वतंत्रता सेनानी के योगदान के बारे में बात करते हुए एक सभा में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि लचित बोरफुकन को याद करते हुए हमें ये भी प्रेरणा मिलती है कि देश हित को स्वार्थ से ऊपर रखना चाहिए। आइए सुने उनके संबोधन का ये अंश। साथियों, हमारे हजारों वर्षों की जीवंतता, हमारे पराक्रम की निरंतरता, यही भारत का इतिहास है। लेकिन हमें सदियों से ये बताने की कोशिश की गई कि हम हमेशा लूटने पीटने वाले, हारने वाले लोग रहे हैं। भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है, विजय का इतिहास है। भारत का इतिहास अत्याचारियों के विरुद्ध अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने का इतिहास है। भारत का इतिहास जय का है, भारत का इतिहास जंग का है, भारत का इतिहास त्याग का है, तप का है। भारत का इतिहास वीरता का है, बलिदान का है, महान परंपरा का है। लेकिन दुर्भाग्य से हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। आजादी के बाद जरूरत थी हमें गुलाम बनाने वाले विदेशियों के एजेंडे को बदला जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। देश के हर कोने में मां भारती के वीर बेटे बेटियों ने कैसे आतताइयों का मुकाबला किया, अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस इतिहास को जानबूझ करके दबा दिया गया। क्या लचित बोरफुकन का शौर्य मायने नहीं रखता क्या? क्या देश के संस्कृति के लिए, पहचान के लिए मुगलों के खिलाफ युद्ध में लड़ने वाले असम के हजारों लोगों का बलिदान कोई मायने नहीं रखता? हम सब जानते हैं कि अत्याचारों से भरे लंबे कालखंड में अत्याचारियों पर विजय की भी हजारों गाथाएं हैं, जय की गाथाएं हैं, त्याग की गाथा है, तर्पण की गाथाएं हैं। उन इतिहास के मुख्य धारा में जगह न देकर पहले जो गलती हुई, अब देश उसे सुधार रहा है।
यहां दिल्ली में हो रहा ये आयोजन इसी का प्रतिबिंब है। और मैं हेमंता जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि ये कार्यक्रम दिल्ली में किया। वीर लासित बोरफुकन की शौर्य गाथा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए असम सरकार ने कुछ ही दिन पहले एक म्यूजियम बनाने का ऐलान किया है। मुझे बताया गया है कि हेमंता जी की सरकार ने असम के ऐतिहासिक नायकों के सम्मान में एक मेमोरियल तैयार करने की भी योजना बनाई है। निश्चय ही ऐसे प्रयासों से हमारी युवा और आने वाली पीढ़ियों को भारत की महान संस्कृति को ज्यादा गहराई से समझने का अवसर मिलेगा। असम सरकार ने अपने विजन से जन जन को जोड़ने के लिए एक थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया है। इसके बोल भी बहुत अद्भुत है। ओहो मार आकाखोर, ओहो मार आकाखोर, भूटा तोरा तुम्ही। हा और हो कोटी, पोरी भाखा तुम्ही। यानी असम के आकाश का दूर तारा तुम हो, साहस शक्ति की परिभाषा तुम हो। वाकई वीर लासित बोरफुकन का जीवन हमें देश के सामने उपस्थित कई वर्तमान चुनौतियों का डटकर सामना करने की प्रेरणा देता है। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हम व्यक्तिगत स्वार्थों को नहीं, देश हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हमारे लिए परिवारवाद, भाई भतीजावाद नहीं, बल्कि देश सबसे बड़ा होना चाहिए। कहते हैं कि राष्ट्र रक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी न निभा पाने पर वीर लासित ने मोमाई को भी सजा दी थी। उन्होंने कहा था, देहोत कोई मोमाई डांगोर न होए। यानी मोमाई देश से बड़ा नहीं होता। यानी कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी रिश्ता देश से बड़ा नहीं होता। आप कल्पना करिए, जब वीर लासित की सेना ने यह सुना होगा कि उनका सेनापति देश को कितनी प्राथमिकता देता है, तो उस छोटे से सैनिक का हौसला कितना बढ़ गया होगा। और साथियों, ये हौसला ही होता है जो जीत का आधार होता है। मुझे खुशी है कि आज का नया भारत राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट के इसी आदर्श को लेकर आगे बढ़ रहा है। जहां भारत विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर गया है, वहीं भारत के युवा उद्यमियों के बीच में भी एक नए तरह का उत्साह है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्स में भी भारत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। योगेश बिरला सक्रिय हैं एक सोलर पावर इन्वेस्टमेंट के फील्ड में। क्या सोचते हैं वो भारत की आर्थिक संभावनाओं के बारे में? क्या संभावनाएं हैं विदेश से सोलर पावर के क्षेत्र में निवेश करने का विचार करने वालों के लिए? इसके बारे में हमने उनसे बातचीत की। आइए सुने योगेश बिरला के साथ हुई बातचीत का ये अंश। So I'm joined by Yogesh Birla ji, joining me from India, and he is passionate about India's emergence on the economic scene as far as
world affairs are concerned, and what makes you so excited, especially from the point of view of solar energy and Modi government's focus on solar alliance, and you yourself are in the field of solar power investment banking. So talk to us. 2022 solar energy, India's economy. Thank you, Mr. Vyas, awarding of this opportunity when I can introduce what India is having where world can invest. Right. So we are one of the biggest consumer base as well as one of the biggest manufacturing base and emerging phase. And it will be the most balanced economy where you have consumers, where you have production. So it is purely an emerging thing and very balanced and emerging and reliable economy. And when I talk about solar, see, industrial production is growing in India, domestic market is growing in India, consumerism is taking a new hype. So whether you say residential upliftment, everybody who was not able to afford an air conditioner in villages, now they have shifted to cities or even villages are getting uplifted. So they need air conditioning, they need refrigerators, we have electronic vehicles, they need charging. So all these things together bringing demand of electricity to a new highs, new levels. So we need more power. India, since respecting the sentiments of environment protection, environment friendliness, and carbon protocol of Japan, USA, Europe, all those standards. So India is saying that if I need to generate more power and I don't want to harm environment, then what is the sustainability solution is solar power. The best advantage how solar can be developed in India. There are three important things in solar power projects. You need biggest open land area that is evidently available in Rajasthan state, Gujarat state, Maharashtra or MP. Few states which are desert, which are having barren lands where the water level is so low that land is not of any other use. You can't do any agriculture over there. You can't go for the civilization on that land. So government of India in 2005 they started thinking about putting up the solar power projects over there. So first key factor for putting a solar project is availability of land that is there. Secondly, we are in that demographic geographical zone that we are getting highest radiation of solar power, solar sun. So when I'm right now, I'm sitting in Jodhpur. That is called Sun City of Asia. The highest solar radiation is there, and that solar was evaporating water from underground level. Now, in the solar, we are using those solar rays very positively to generate electricity. The third thing is cost of capital, since solar is a very big investment project, and now relying on the growth of India, the stability of India, and rising need of power across world, all the investors, big hedge funds, NRIs, ultra HNIs, or big pension fund, even government to government, all the governments are investing in India for solar power projects. So three key factor: availability of land, then second is demand is there, third investments is there. Now coming to the technology, I expect world to come forward, world to develop countries to come forward to India. They land their technologies and technological advancement for the benefit of solar power projects in India. Now policies are so open that even a single investor sitting somewhere with $1 million in savings, that can put up 1 megawatt or 2 megawatt of power, solar power project, and power generated from it is purchased by government of India in various different secured and safe agreements of 10 years to 25 years. But when I expect technologies to come forward, it doesn't mean that there is no technology available. The thing is, solar is such a vast field that start from generating power to solar power devices to electronic vehicle charging stations to cold storage to cold warehousing chain for food and agri-food. See, solar technology is evolving from 1983 as we are sitting in 2022. Earlier, when 2007, I put a first solar project, 1 megawatt 1 megawatt of solar project. It required 11 acres of land. Now technologies are compressing. They are generating more power in lesser space of the solar panels. So as on this date, I just need 4 acres of land. So I mean to say technologies to come to India
in two peripheries. Like first, I need a cost of production. Cost of production of solar panels should go low. So remote rural areas, I got it. tribal areas of India, they can afford solar power. They can save environment. Number one thing. Secondly, as you rightly asked about ease of doing business, India is not that India which was India, right? So now we are at par, or we can say in a better corporate governance, where you have all the single window clearance kind of thing. You have easy remittances across the world. You have best tax practices that you are earning in India. You want to take your dividends or money or earning back to your countries in Europe, USA, or anywhere across the world. We have double taxation avoidance agreement with most of the countries. We are one of the favorable destination by Standard and Poor in all those ratings. So ease of doing in any aspect, like bringing funds to India, up to the deployment of the funds to India, and till the time you are owing assets, like owing a solar project, owing the land, everything is very much streamlined. That's why this is the moment we are calling world to come and be part of this growth story in India. भगवान दत्तात्रेय की जयंती के अवसर पर उनका स्मरण करने के साथ साथ ये भी याद करते हुए कि ऋषि अत्रि और सती अनुसुईया के पुत्र के रूप में जो प्राकट्य हुआ वो भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी तीनों के संगम के रूप में सती अनुसुईया की गोद में खेलने वाले भगवान दत्तात्रेय ने किस तरह से शताब्दियों से प्रेरित किया है, और ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति तीनों के संगम की प्रेरणा लेकर जो भगवान दत्तात्रेय की दत्त शक्ति है, उसके साथ जुड़े हुए विश्वयोगी विश्वम जी महाराज, जो कि संस्थापक हैं विश्व मंदिर गुंटूर के, उनसे हमने दत्त स्वरूप के बारे में दत्त जयंती पर जो विशेष चर्चा की थी, उसका ये अंश प्रस्तुत है। Atri means not three, above the three gunas, sattva guna, rajo guna, tamasya guna. When a person sadhaka doing sadhana, mentally he has to attain a state above three gunas, sattva guna, rajo guna, tamasya guna, and he has to split. He has to cut off the bondage of the three bodies. Sthula, Sushma, Karana. Sthula Sarira, Sthula, Sushma, Karana. Sthula Sarira, Sushma Sarira, Karana Sarira. Tripurari, that is when we are calling Shiva also Tripurari. Tripura, who destroys the Tripura? Tripura means three Sarira. Then the sadhaka becomes Datta. He comes and adopts. He comes and becomes one with the sadhaka himself. Then the sadhaka himself becomes the Swarupa. That is the Datta Sampradaya. Dattatreya, the omnipotent cosmic power, which is pervading through every atom of the universe, which is responsible for the creation of the universe. First, you see, now simply, now we are living on the earth. Come on, go above and above the earth. When we go above the earth, we can see the earth, a globe, a round ball, like a round ball, rotating around itself, and it is rotating around the sun. It is going. There are so many balls going around the sun. Now grahas are going. If we go above and above, we can see the immense, huge, infinite galaxy, universe. All the galaxies are moving around Dhruva Nakshatra. You know that. I need not tell. But in the case of divine knowledge, people are not convinced. They start by the logic that if God is everywhere, then I need not do anything because I'm already one with it. So they take that part. But the sadhana part is
No, not what very abstract. God is everywhere. We need not do anything. Suppose, for example, oxygen is everywhere. Oxygen is everywhere. Air is everywhere. Oxygen is everywhere. We need not breathe. If any person say like that, what is the importance? What can you say? Although oxygen is everywhere, for ourselves to have life, we have to breathe. We have to take the oxygen in and carbon dioxide and impurities out. The same way, the oxygen, for example, I have given the example, and the current also. Current is everywhere, power is everywhere, current is everywhere in every atom, in the water, and the coal. From the water, we can extract electricity, power. From the coal, we can extract electricity. In the same way, atom also, from atom also we can extract electricity everywhere. But we have to extract and we have to send that through electric lines to the house. Then if we have connection with the bulb, we are getting light. If we have connection with the radio, we are listening sound. We are getting, in the same way we are getting heat. We are getting, if we send that current into the AC machine, we are changing the atmosphere also. But all pervading it is. But we have to work, do sadhana. In the same way, God is everywhere for our benefit. If you want to become powerful, peaceful, spiritually also, I am telling spiritually also, you must have connection. Yoga is that for that connection. If you have connection, then it flows into your body. If there is no connection, although you know theoretically, what is important? So what I am telling is the real truth. In spiritual field also, those who are thinking, if God is everywhere, we need not go to the temple, we need not go to gurus. It is wrong. It is a wrong idea. While they are not thinking correctly. We have to go to a guru. We have to see, serve him. We have to learn from him theoretically, practically. We have to put into practice his preachings. We have to do as he wants us to do. Then we have to become like Guru. First of all, we have to think that our body itself, the temple of the Lord. We are going to temples to worship the Lord. But actually, Deho Devalaya Purusha, the ancient Sanatana declare, Deho Devalaya Purusha, body itself is the temple of the Lord. और अब आज का विजन ऑफ एशिया वॉइस कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले फिर एक बार आपको याद दिला दें कि प्रसन्न रहें, अपना ख्याल रखें। हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।